Hi Prithvi. Hi Sampriti. Sampriti, just be in this, the call today. We're going to talk about a couple of very important subjects today. हाँ पृथ्वी आज तो मचाना है. Am I audible? Like, Prithvi, can you hear me? Cool. Hey Pratigya, hi. Good you have joined. Ishaan, yes. Ishaan, I'm not been able to add you. Hold on for a second. Huh? Hold on. I've sent you already. Hey Ishaan, hi. Can How are you? you hear me? Yes, I can hear you. Great. So What's up? we'll start. We'll not start. We'll just wait. There are a Yes. couple of people who are also there. I'm waiting for a couple of guys to join in. Hi Yes. Sonobar. Hi Sagar. Hi Sanobar. मैं खुद बहुत टाइम बाद लाइव आ रहा हूँ. So how is it going, bro? How's All, everything? How's life? all well, all well, all well. आप बताइए. Great. Chal Congratulations. raha hai. It's good. So let me just introduce Ishaan. जो उनको जानते हो और जो उनको नहीं जानते हो. So Ishaan is one of the best and one of the most it's a very good upcoming singer. He's an independent artist and he has already made his mark in the industry. He has been nominated for a couple of awards. He has performed it in a couple of good places. He has he has performed in front of Sonuji, and he's doing really well for himself. And the idea of this entire conversation, is just so I've started this new podcast called Indie Cast. The idea behind this entire IndieCast is just to understand the artist's perspective. What are we going through today in the industry? क्या चल रहा है industry में? And yesterday I had a wonderful conversation with one of our artists called Abhay Tyagi. Today I'm having this conversation with Ishaan. Since he's very experienced and he has been in the industry for quite some time. And hi Rahi, a lot of good people are joining in today. Ishan, you're pretty popular as well. So Ishan, I would just like you to introduce yourself a little bit to all the people who are there on the call, so that they also know who you are, what you do. Okay, so first of all, I would like to thank Subhro for having me. And it really means a lot to me to be a part of something which Subhro has been talking about for a while to me as well. So congratulations, Subhro, for this. And Thank you. uh, so I'm a singer, composer, songwriter. I hail from a very small town. It's called Bahraich, near Lucknow, and born and brought up in that town only. And then always thought of doing, never thought of actually doing music, but during my college days, things flipped, and then thought of doing music. I took it, kind of, I saw it as a way of life. Right. So
then I always aspired to, move to Bombay. And in 2020, I actually planned things for myself to, shift to Bombay. But unfortunately, COVID happened, and those 3 years were straight away gone. Last year, I moved to Bombay, and then yeah, things have been going good. I've been meeting a couple of people. I've been trying to make some good music. So yeah, that's pretty much about it. I've released a couple of tracks independently, then also featured into a couple of film music as a singer, and also recently got featured into Coke Studio Bharat as a additional vocalist. Great, great. So, Ishan, first and foremost, welcome to the IndieCast. It's a podcast. Thank you. Also, I would like, to give you a little, idea about, what I do, about my background as well. So, Ishan knows it. So, I had joined Saregama. I was working with Saregama sometimes, back. I was heading the Saregama Fresh Independent Artist. Post that, I had worked with another film or a record label company. As you can say, I've worked with, two feature films called work with them. I don't want to name the films. I've worked with independent artists. I right now do a lot of live shows pan India. I am coming up with a lot of IPs in terms of events, in terms of music events, and the idea is not to be a part of the. I have been a part of the industry for a pretty long time, and I've worked with industry people, and there are a lot of challenges, of course, in any industry that we face, and I have faced a lot of challenges. So the idea is just to understand and make aware. The basic idea is to make aware of what exactly is happening in this industry and where are we standing today. What about the newer artists who are there in the industry today? So Ishan, I would like to start with a couple of uh, questions with you. So today, in this crowded and a very competitive, the music scene that we have, what are the biggest challenges you have faced in actually getting visibility and recognition for your work in this independent artist? Considering there are so many artists, what do you think are the challenges that you have faced personally, and what do you recommend to all the other people who are there, all the other independent artists? How can they overcome this? Uh, okay, it's quite. हिंदी में भी बात कर सकते हो यार. No, no, chalega. I can talk like in English. I think that would be better. So actually, it's a very challenging question, and actually more challenging to frame a particular answer about it. क्योंकि uh, in fact, as per my experience, या फिर mostly हर artist का experience almost similar होता है when they are starting out. क्योंकि कहाँ से शुरू करूँ यार? Like there are so many instances about it. So, like one of the instances as an artist is that you always seek validation, right? About your craft, about your songs, or whatever music you are making. And one of the best way out, as per new artists, is to get their music released through labels. Uh, so वो बहुत बड़ा challenge होता है to even आज का time is not CD and pen drive का जमाना या Yeah, फिर but cassettes का you know, जमाना कि you have to one keep question. visiting. Yeah. I'm sorry to ask. Why do you think कि आज अगर हम लोग कोई रिकॉर्डेबल के पास जा रहे हैं, तुमको क्यों लगता है कि वो चैलेंज है? मतलब today there are so many big record labels in the record labels are there. So many smaller record labels are also there. So why do you think that the challenge is there? Yeah, that's what I'm coming to. What are the So challenges? Yeah. challenges वही हैं कि first of all that even though things have become more accessible to all of us now, phones है, emails है, you just drop an email. But what happens after you drop an email or after once you had a meeting with them? You have to take consistent follow-ups with them, which is many a times very frustrating. Hmm. मतलब it has happened with me as well. Like 100-150 बार follow-up लेना पड़ता है एक particular बंदे से कि सर मिल लो. It happens that way. Uh, and ये तब हो रहा होता है जब सामने से ऑलरेडी एक लेवल बोल चुका होता है कि हाँ वी लाइक टू ऑफ योर सॉन्ग्स एंड प्लीज डोंट रिलीज these songs independently. We would like to release these songs and submit as a bank of at least 10 to 12 songs. So this Yeah. happens uh, in such case. And after, at least releasing a particular body of work, like I've released almost 10, 12 songs independently and also did couple of film projects. And this has happened after that. तो मेरे लाइफ में नहीं सबके हर आर्टिस्ट के लाइफ में ये होता है एक्चुअली कि लेबल्स का ये है थोड़ा
और कमिंग टू न्यूअर लेबल्स, तो न्यूअर लेबल्स के साथ आई एम नॉट श्योर हाउ actually they work, because I'm someone who don't want to, you know, who have never looked out in that perspective कि अच्छा मुझे नए लेवल के साथ काम करना है. Yeah, if it is giving me a better deal, good deals, because in past few years things have went wrong with a couple of my friends whom I've seen, जिन्होंने नए लेवल के साथ गाने रिलीज किए and things flipped completely. तो एक थोड़ा सा वो भी इनसिक्योरिटी रहती है एज एन आर्टिस्ट, यू नो यू आर सेलिंग But आउट you योर know, राइट्स या of course, मास्टर्स. yeah, तो yeah. एक See, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है. again, there is another very important thing is that, आज जैसे तुम, जो भी आते हैं, we also had this discussion yesterday. Everybody wants a financial stability in terms of सबसे ज्यादा चैलेंज ये होता है आर्टिस्ट के लिए. ठीक है, we work day and night to make a song, create a song and all, and we want the song to be positioned at the right place or to be sold. ठीक है. Now अगर हम लोग करेक्ट. गाने को बेच भी रहे, पहले बात ये है कि 10 to 12 of the top guys are rejecting the songs because not everybody has the right song selection probably, and people comes from different backgrounds. अगर आज मुझे जो गाना पसंद है तुमको शायद वो गाना नहीं पसंद हो सकता है, तुम्हें जो पसंद है मुझे नहीं पसंद होगा. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि आज इंडस्ट्री में है कि सबको स्टीरियोटाइप हो रहा है. टुडे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी म्यूजिक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रीजनल म्यूजिक, लोगों को सिर्फ पंजाबी म्यूजिक में क्यों फोकस करना है आज. अगर इफ आई टॉक अबाउट रीजनल म्यूजिक, व्हाट अबाउट गुजराती, व्हाट अबाउट मराठी, व्हाट अबाउट बंगाली, व्हाट अबाउट असमीज, व्हाट अबाउट नेपाली. India is a rich, country with a lot of cultures, a lot of languages. This is one करेक्ट. bigger challenge that we are facing. In a way, today also, I would like to tell people that you are also doing a corporate job. You are also into the IT sector, right? But you soon have, we had this conversation earlier, you have also decided that, you would like to leave the job and focus on music. तो तुमको लगता है राइट. कि ये जो सिचुएशन अभी जो चल रहा है इंडस्ट्री में, जो जो रैपिड चेंजेस जो हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन थिंग्स गॉट कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड टुडे, सब कुछ एक 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 डिजिटलाइज हो जाने के बाद जो एनालॉग का जो था वो सब कुछ बंद हो चुका है. Everyday things are progressing, everyday things are changing. Where do you think and how do you think you can bring a financial stability earning through music? वो कैसे होगा, तुमको क्या लगता है? Don't say from only your perspective. If you think from a community perspective that you have so many people around, who will look up to you today, what are the you know guidances or suggestions or recommendations that you would like to share with people? सो सी मैं दो पर्सपेक्टिव से बात करूंगा. एक इज कि एज अ सिंगर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. Thank you, Ankita. दूसरा है uh, एक है एज अ सिंगर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है एज अ कंप्लीट म्यूजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू. Yeah. दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज आज के डेट में प्रॉब्लम विद सिंगर्स इज कि देर आर एन नंबर ऑफ सिंगर्स, हाफ ऑफ देम और 60% ऑफ देम आर अनस्किल्ड. उनको नहीं मेहनत करना है, उनको नंबर्स के पीछे भागना है. दे वांट टू रन बिहाइंड द फेम, दे डोंट वांट टू पुट इन द एफर्ट्स. ठीक है. Right. और बिकॉज ऐसा होने लग गया है, तो अभी कॉम्पोजर्स ने या कोई भी अगर गाना गाने को बुलाता है स्टूडियो में, दे डोंट पे. 80% ऑफ द टाइम इट हैपेंस विद ऑल ऑफ द सिंगर्स कि दे डोंट गेट पेड. That is a problem. ठीक है. That is the ठीक है. biggest channel. स्क्रैच गाने Yeah. के लिए बुला रहे हैं, फाइनल गाने के लिए बुला रहे हैं, दे डोंट पे अभी, बिकॉज क्या है. और वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है सिंगर्स के साथ, स्पेशली फॉर द सिंगर्स लाइक मी हु आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द सेशन ओरिएंटेड वर्क rather than focusing on live music much right now, because I want to establish more of my film music first, then enter majorly into the live gig scene. uh, I think we had a discussion earlier. तो Yeah. उसमें क्या So, होता है कि कंपोजर्स को ऐसा लगता है, या फिर whomsoever is involved in the project, उनको ये लगता है कि अच्छा इसको पे करके क्या मतलब है, क्योंकि he or she will make money through the live music scene. ठीक है. हमको जो पैसा मिल रहा है वो हम सिर्फ कॉम्पोजिशन से ही कमा रहे हैं, या फिर हम जो गाना बना रहे हैं उससे ही मिल रहा है. नाउ तो एक सीन जो एज अ सिंगर मुझे दिखता है, दैट इज टू डू मोर लाइव गिग्स. ठीक है. बट वहां पर भी क्या होता है कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन
so much of live gigs, एक point के बाद एक saturation आ जाता है, where you stop enjoying what you love too. Right. क्योंकि if I talk about the independent music scene, हर आर्टिस्ट वो चाहता है कि वो अपने गाने परफॉर्म करे, ठीक है। मतलब उसको परफॉर्मर बाद में बनना है। आज के डेट में एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मर रादर देन अ सिंगर ऑन स्टेज, ठीक है। सो ऑल थैंक्स टू रियलिटी शोज, ये बहुत बड़ा उनके वजह से भी एक्चुअली ये चेंज हुआ है। But मैं I would like to bring a point here. If you're talking about reality shows or if you're talking about live shows, there are two sections. Me as a singer, see the problem is that today in this situation, आज का generation में या situation में, people needs to be educated more, okay, about how to work and what are the advantages that they have. Challenges तो है ही. So today for a singer, for you, definitely तुम तो ये चाहोगे यार कि देखो यार मैं I will make songs, I will release songs, and then I will perform my live songs. Most of the artists who are performing today, you also, I'm just giving an example. You guys are not performing any of your original songs. But today, if you call in a Pratik Kuhar or a King or whosoever, they will always perform their originals, and people will know their songs through their originals. आज तुम कोई से भी बैंड को लेके आओ, I'll give an example of a Euphoria. बहुत ही पुराना बैंड है, and we know we have grown up listening to their songs. आज भी अगर यूफोरिया के कोई गाना रिलीज करते हैं, वो हर लाइव शो में they will play the song because people will start. See, it is important for us to understand the recall value. ठीक है, लोग गाने का एक पर्टिकुलर ट्यून याद करते हैं, no, or a proper line they always remember. So I think it is very important. All of us, we start performing our live songs also. But the problem यहाँ पे क्या हो रहा है? See how these things are connected. The major problem that people faces while performing their original songs is that उन लोग ने तो गाना already कोई record label को बेच दिया है. They have sold the IP to the record label. Now what happens? The record label has the IP. You will not even get the rights to perform your own song in your own show. Right. These are the challenges, right? Correct. अगर आज तुम ईशान, अगर तुमने अभी तक जितना भी गाना तुमने रिलीज किया, today if I tell you the kind of shows that you do with me, I can sit down today and I can give you, यार चलो मैं तुमको ये गाना ये शो देता हूँ, तुम इसमें पूरा अपना ओरिजिनल करो. Of course, nothing happens over a day. तुमको ये ट्रैक्शन जनरेट करने में, तुम्हारा अपना कम्युनिटी बनाने में, people already knows you, pretty popular, ठीक है. It's going to take some time. It's going to take some time. So आजकल का सिचुएशन में, जनरेशन में क्या हो रहा है, a lot of new people are coming. सबको अचानक से याद आ रहा है कि यार मुझे गाना गाना है, I need to be an independent singer, ये मुझे फिल्म में जाना है, ये जाना है, वो जाना है. They suddenly jump into the well. कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन they don't know, yeah, probably they jump into the ocean, but they don't know that there are bigger sharks who are already there in the ocean, right? तुमको अगर तैरना नहीं आता है, तुमको अगर शार्क से लड़ना नहीं आता है, तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है? And you will be exploited. You'll be exploited to the extreme. Exploitation भी मैं नहीं बोलूँगा, because every company has their own agenda, has their own protocols that they will definitely follow up, right? That's how things are working in the industry. So I believe that for us, for artists like us, who I also consider myself as an artist because I'm a drummer, I am a DJ, I'm a producer too. So अभी तक मैंने अपना कोई गाना कुछ भी मैंने रिलीज नहीं किया. When I was working with सारेगामा या any record label, I was planning to release my songs, but मुझे पता है और पता था कि अगर मैं करता हूँ मैं फंस जाऊंगा. So I always decided that I will go independently. So I think it is always better to release your songs independently so that you have the rights to your songs. You can play the songs anywhere in any place that you feel like. You can use those original compositions to build your own content, build your own network, build your own community, and then you grow big. Again, I mean, this is my perspective. Okay, I'll just move to the next question. And do you want to add anything out here? Yeah. So I completely agree to what you say actually, because if you see in the West how artists are generating revenues on their own discography. That's what happens because they hold the masters and performing rights, and in most of the cases the publishing rights as well, or they kind of have a deal with the record label that I'll own 50% of the masters, I'll own 50% of the publishing rights, and then you do whatever you do with the song, or I'll do whatever I'll do with the songs, and whatever publishing deals will split जैसा भी उनका deal होगा.
So I think ये एजुकेशन इंडियन आर्टिस्ट्स में होना बहुत इम्पोर्टेंट है. Also, और हाँ, मतलब लेटली exactly. आई वाज आल्सो स्टॉप चेजिंग द लेबल्स, क्योंकि क्या होता है कि द मोर यू चेज द लेबल्स, आप अपना एक क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो आप कम करते जाते हो इन फ्रंट ऑफ Right. द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इन द लेबल. सो ठीक है, लेट देम कम, देन यू हैव अ पॉइंट Of कि course, अच्छा मैं ये of course. गाना इतने में दूंगा, उससे कम नहीं हाँ, दूंगा, अदरवाइज मेरा कोई exactly. फायदा नहीं होना. Right. क्योंकि सी लेबल का क्या काम है, लेबल सीज अ बिगर पिक्चर, वो अपना प्रॉफिट निकाल लेगा. वो आपको 1 लाख निकाल रुपए लेंगे. देगा, आप 1 लाख Definitely. रुपए लेके खुश हो जाओगे, बट Definitely. वो उस गाने से 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ भी कमाएगा, बट यू विल बी जस्ट हैविंग दैट 1 लाख रुपीज, और उसका आप करोगे क्या? आपने तो मास्टर्स ही दे दिया. Exactly. Because how this works, अगर record label को तुम सोचो कि for example, for all the people who are here today, you are selling a song to a record label for a certain amount. सोचो कि तुम उसको 3 लाख 4 लाख में दे रहे हो. Record label को पता है, yes, I'm going to save it live, अंकिता. Record label को पता है कि मैं जो ये 3 लाख उसको दे रहा हूँ, how can I make it, मैं ये 3 लाख का 30 लाख में कैसे करूंगा? ठीक है, that's how they're making profits. That is their job, that is their protocol. But भाई आज मैं एक आर्टिस्ट होके मैं सब रिकॉर्ड लेबल्स के पास 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके मैं गाना देते जा रहा हूँ, मैं गाना लोग खरीदते जा रहे हैं, लोग करोड़ों में कमा रहे हैं यार, अपने को क्या हो रहा है? The other thing which I feel there is another challenge in the record labels are with the ANR heads who are there, the artists and repertoire. So there are certain people working in the industry who are really open. They really want to work for the people in the industry. उन लोग चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसा आर्टिस्ट को लेके आए जो who are new, who are fresh, and who can make it big. Today, the previous record label which I represented, I was representing the entire fresh artists, right? All the new artists and all. But the certain record label did not have that patience in their mind. इन लोग ने फटाक से बंद ही कर दिया क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है. भाई तुम तो पहली बात ये है कि तुम आर्टिस्ट को लेके आ रहे हो, तुम्हारा एजेंडा था तुम फ्रेश आर्टिस्ट को लेके आओगे. Today, if you're bringing a fresh artist, you cannot expect that fresh artist to have millions in streams. You need to give that artist some time to build up. तुम इसके पीछे तुम क्या मेहनत कर रहे हो? What are the promotions that you are doing? What are the playlistings you are doing? How much you are pushing the artist? तुम तो नहीं कर रहे हो आर्टिस्ट को इतना push. At the end of the day, it all goes in vain. इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा सफर करते हैं आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. We Exactly. everybody suffers. Everybody in that way suffers. Okay, so moving on. The last question, because I don't want to make this too long and boring for people. The last question which I want to ask you is that, have you ever thought of doing any collaborations with somebody? Recently, you have met Sonu ji. Okay, have you thought that you will go for a collaboration with Sonu Nigam or someone else? And if you have thought, what do you think are the greatest advantages and what are the challenges? ये collaboration इन लोग के साथ करके तुमको क्या मिलने वाला है? And what are you going to gain and what are you going to lose? This is something very important that I also want to know from artists. कि why am I asking you? Today a lot of artists comes to me and tells me that, bhai, I want to collaborate. So I know almost all the people from the industry. I'm coming up with a new tour, and I'm just saying I represent a brand called Excloosiv Events and Communication. That's my own brand. We are into live events and IPs and everything. We are coming up with events where we are featuring people. Sorry. I just got a call. Yeah, Ishaan, can you hear me now? Yeah, we got it. Yeah. Yeah. I'm coming up with a tour with Shilpa Rao and Ash King, Nikhil Paul George. We are planning to get in a couple of other artists like say Nikita Gandhi, Jonita Gandhi. We're talking to few other artists. So a lot of artists comes and tells me, I want to collaborate with this artist. So I want to understand what is it that they think that they will get through collaboration. Is it the right decision to get collaboration? And if you collaborate, what are the challenges and what are the advantages? Okay. So I think in today's time and date, it's very important to collaborate. First thing is that you get their audience and they get your audience. भले ही आपके 5 लोग हैं listeners, but they are your loyal listeners and they go to listen to that collaboration. And by the way, I have a very बहुत सारे good singer. Sorry to interrupt. There is Nitin Sharma who has joined us today. Nitin is, I'm sure that you might know him. So he's a friend. Nitin, hi.
from me and Ishaan. Hope you're doing well. अगला इंटरव्यू तुम्हारा होने वाला है. So get ready. All right. So sorry, Ishaan. Please carry on. Yeah. So I think सबसे बड़ा benefit जो होता है with collaboration is the audience exchange first. Right. Next is that you get to learn so much from these experienced artists. You know, you learn their process, how they treat a song, how they look at a song. या उनका vision क्या है to whatever you have made. सबसे बड़े challenges is that if that artist is being managed by any management या फिर किसी manager के through, तो वो collaboration almost becomes more of a business rather than an art. Absolutely. क्योंकि उनको सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी नंबर्स यू हैव Absolutely. First ऑन thing that they स्पॉटिफाई या फिर किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप पे आपके कितने नंबर्स हैं और आपके प्रमोशन प्लान्स क्या हैं. ठीक है, इफ यू somehow if you insist them कि हाँ भाई हो जाएगा, I'm trying to build up my discography and I have this plans. Next thing comes up is कि ठीक है ये तो इतना चार्ज करता है. ठीक है, for any independent artist it's really hard to sum up that amount of money which they quote, because again it's not a film song, it's an independent song. Right. And it's more like a collaboration. तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आ जाता है. तो आई थिंक ये तो मेजर चैलेंजेस हैं कि फर्स्ट इज तो कि नंबर्स सबसे पहले हर कोई देखता है. Right. और उससे भी पहले क्या होता है कि 80% ऑफ टाइम पीपल डोंट रिवर्ट, सो व्हिच इज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग. 80% of I think times people don't revert. there is someone, if somebody wants to join our conversation, and please feel free to join, and we'll just, if you have any questions for Ishaan, I think Vicky Saharia has sent me a request. Let me see if I can add him to the call. Yes, if he has any kind of questions, he'll be able to, if you would like to join. So because this kind of conversation is very important for us. Hi. Hello. How are you? Bhai, hello, bro. Hi. Just give me a second. Sure. So Vicky, हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम ठीक हो भाई. बताओ आपके बारे, आप क्या करते हो? मैं भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ ब्रो. अभी मेरे 6 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं. अरे वाह, तो कांग्रेचुलेशंस. हाँ, इंडिपेंडेंटली किया है या तुमने कोई रिकॉर्ड लेबल के साथ रिलीज किया है? नहीं. 2 सॉन्ग किसी कंपनी के साथ कोलैब किए थे. एक रू सॉन्ग और सबसे पहला नहीं जीना, वो मेरे सबसे पहले सॉन्ग थे. अभी जो सॉन्ग मैंने किए जिन तेरे नाम और मैं और तू, और एक जिन तेरे नाम मैं और तू, और 1-2 सॉन्ग हो रहे हैं, बम बम भोला भंडारी समथिंग कुछ करके. मतलब मेरा सबसे बड़ा ट्रैक जो है जिन तेरे नाम और दिल के पास और मैं और तू अभी मैंने बॉलीवुड टाइप का रिकॉर्ड किया था, कंपोज किया था. लिरिक्स भी मैं खुद ही लिखता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, सारी चीजें. तो अभी बैंक बनाया हुआ है, 400-500 सॉन्ग बना के रखे हुए हैं पहले ही. मुझे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था यार, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि सी देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट. मुझे ये पूछना था, आर यू गाइज हैप्पी बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, या तुम लोगों को बॉलीवुड में भी जाना है? बिकॉज दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आज के इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट का अ मिनिमम और अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज नॉट मोर देन 3 years. क्योंकि आज अगर तुम देखो कि इफ यू टॉक अबाउट एनी ओल्डर आर्टिस्ट, 2 से 3 साल मैक्सिमम, उसको रिप्लेस करने के लिए सब आ जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज ऐसा है कि तुम लोग को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? And is it Bollywood that you are focusing on, or you only want to be an independent artist and release your song so that people knows you as an independent singer, not as a playback singer? I think in my case, I would like to go for both of them. But why do you think that Bollywood? How is Bollywood going to help you? Like तुमको क्यों लगता है कि out of Arijit Singh and see today Ishaan Nigam is also not getting a lot of songs in Bollywood. They are taking new faces. But the challenge is that everything happens through referrals. सब कुछ referrals में है. But अगर आज तुम ये भी सोचते हो कि जो बंदे आज बॉलीवुड में प्लेबैक कर रहा है, new guys, they have also worked their ass off to come to that stage, get their songs recognized. एक hit उन लोग ने दिया, then they get picked up.
That's the question. Absolutely. So how do you think that you're going to break this entire challenge and you know overcome this and be a Bollywood singer? क्या लगता है तुम लोगों को? I think बहुत difficult question है ना ये सब? I think that's the beauty of art कि एक तो कोई कंपटीशन नहीं है हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि you have to consistently work on yourself to be there. आप absolutely. आप That's आपको it. किसी को पीछे नहीं करना, आपको किसी से आगे नहीं जाना. इट्स अबाउट कि आपको अपने आप को पीछे छोड़ते हुए कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करके आगे बढ़ना है. एंड यू हैव But टू यहाँ पे एक question है. या This is something that you said right. But सोचो आज के situation में generation में I'll be very honest and practical. ठीक है? एकदम we'll have a very open conversation here. Today whenever we are going, अगर हम लोग आज किसी के साथ जाके बोल रहे हैं कि you know there is a female artist, ठीक है? The first thing that they're gonna ask is that उनका age क्या है? ठीक है? Is that artist old or is that artist young? So यहाँ पे क्या हो रहा है? इन लोग फीमेल आर्टिस्ट को स्टीरियोटाइप कर दे रहे. क्यों? बात यह है कि क्यों कर रहे हैं. सेकेंड इज दैट दे विल आस्क अबाउट योर एज कि तुम्हारा उम्र कितना है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज का अभी द मेन टारगेट ऑडियंस इज यूथ. ठीक है? अगर यूथ है, इफ द आर्टिस्ट इज अबव 35, अगर फीमेल आर्टिस्ट है, आई एम जस्ट सेइंग, अगर फीमेल आर्टिस्ट है, इफ द आर्टिस्ट इज यंग दे विल पे मोर, एंड इफ द आर्टिस्ट इज अबव 30 32 इन लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं. इन लोग को फ्री पे लेके आओ, फ्री में लेके आओ, विल डू रेवेन्यू शेयरिंग, फलाना ढिमका, ऑल दोस थिंग्स. आई डोंट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ. Because the more you become, the more you age, you keep on becoming better and better. ठीक है? But considering this factor as well, एक जो तुम्हारा टाइम तुम्हारे हाथ से निकल जा रहा है, एक उम्र के बाद तुमको लगेगा कि यार मैंने लास्ट 15 साल मैंने किया क्या? मुझे तो कुछ I did not make any kind of achievements. मैंने कुछ बड़ा काम किया ही नहीं. कोई मुझे जानता ही नहीं है. I know my few friends who knows me. कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरा दोस्त जानते हैं, मेरा गाना आया, that's it. ये जो तुम्हारा 15 साल का एक साल में पूरा खत्म हो जाएगा, तुमको काम करने का मन भी नहीं रहेगा. ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक इज द चैलेंज आउट हियर? ओवरकम कैसे करना है इसको? हाँ, मेरे हिसाब से आपकी कई बातें बहुत सही है, क्योंकि एक टाइम पे ना ये चीजें आ जाती हैं कि आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, रियाज कर रहे हो, आपने सॉन्ग बना के रखे हुए हैं, आपने सारी मेहनत की है, और आप अपने हिसाब से जॉब करके, पैसा सेव करके, लाइव शोज करके आपने कुछ सॉन्ग निकाल दिए हैं, और उनमें से मान लो कुछ सॉन्ग नहीं चले, है ना? तो ये चीजें डिसअपॉइंटमेंट आती है कि ना यार हुआ नहीं, इतना टाइम हो गया, हुआ नहीं. ये फैक्ट है, कहीं ना कहीं तो आती है. और फिर कभी कभी लगता है यार मैं गलत जगह आ चुका हूँ और फंस चुका हूँ, अब क्या किया जाए. ये आता है, बिल्कुल सही कहा आपने. तो अभी क्या हुआ है, पर ना एक पॉजिटिविटी हमारे पास ये आई है कि ना हम जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले म्यूजिक इन्वॉल्व था, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, अभी इन्वॉल्व है. अब है ना आर्टिस्ट वाली लाइफ अलग हो गई है थोड़ी. आपने देखा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत आ गए हैं. तो इससे ना एक चीज होने लगी है कि ना अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट चाहे वो जॉब करके या फिर कोई कंपनी अगर उसे कोलैब ना ही करे तो वो अपने दम पे कर सकता है. तो अब ऑडियोज भी काफी आप रीजनल प्राइस में निकाल सकते हो, खुद प्रोडक्शन सीख सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. तो ये करने के बाद ना ये तो है कि भाई आपने इतने सारे सॉन्ग बना रखे हैं, तो हमें अब निकालना ही है, चाहे कभी भी चले, क्योंकि सक्सेस का कुछ पता नहीं, कभी भी मिल सकती है. एक तरफ ये पॉजिटिव, लोग बोलते हैं कि आपकी डर भी है. मतलब बोलते हैं कि अगर तुम आज 15 गाना रिलीज कर रहे हो, 20 गाना रिलीज कर रहे हो, वहां से एक गाना अगर तुम्हारा निकल जाए ना, तुम निकल जाओगे. निकल जाओगे. कितना देर के लिए? द आइडिया कितना टाइम के लिए, कितना तुम मेहनत करोगे, कितना घिसोगे? तुमने आज बताया कि तुमने मैं जहां तक कि बताऊं, क्योंकि मैंने, अगर मुझे कहीं चांस मिलता है, अगर चीजें होती हैं, तो मैंने वो कम से कम आगे तक की तैयारी के लिए मैंने हर जोनर के सॉन्ग बना रखे हैं. मैंने पहले से ही कम 400-500 सॉन्ग बना के रखे हुए हैं विद कोड चार्ट एंड एवरीथिंग. और न्यू जनरेशन के भी, जैसे पॉप भी हैं, हिप हॉप भी हैं, और क्लासिकल भी हैं, सारी चीजें हैं. तो वो आपकी नॉलेज और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है. अभी मेरे बात सोचो, सुनो अभी मेरे बात. मैं 3-4 हजार से ज्यादा आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ. ठीक है? ये 3,000 आर्टिस्ट तुम पकड़ के चलो, वहां से 10% मुझे आके बोलते हैं कि यार मेरे पास 400 गाने का कैटलॉग है. ठीक है? आई हैव 400 सॉन्ग्स, अलग अलग जॉनर का. एक रिकॉर्ड लेवल में ऐसे 100 लोग जा रहे हैं 400 गाने का कैटलॉग लेके. राइट? तो लोग तुमको क्यों चांस देंगे? बाकी किसी को चांस क्यों नहीं देंगे? और अगर कोई रेफरेंस से जा रहा है, अगर मैं किसी को जानता हूं, अगर मैं रेफर कर देता हूं कि यार ये बंदा जा रहा है, वो तो जाएगा. अगर तुम दोनों, फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों का एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पास जाके बोलता हूँ कि यार मैं इसको भेज रहा हूँ, इसके पास गाना है, इसको ले लो. ठीक है?
ईशान ऑन द अदर हैंड वो इंडिपेंडेंटली अप्रोच करता है। इन लोग क्या करेंगे, मेरा रेफरेंस लेके जाएंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर फिर भी मतलब अगर ईशान का गाना तुम्हारे गाने से ज्यादा अच्छा हुआ ना, फिर भी इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये इंडस्ट्री में चल रहा है, ठीक है। मुझे जो लगता है कि प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम है कि हम लोग सब चुप बैठे हैं, बिकॉज हम लोग खुद को एक्सप्लॉइट करने दे रहे हैं। वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी। इंडिपेंडेंट जो कम्युनिटी होना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्या है, जो फिल्म नहीं है, नॉन फिल्म म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट म्यूजिक। आज स्पॉटिफाई ने आके सब कुछ खराब कर दिया। स्पॉटिफाई ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक को डिवाइड कर दिया, इंडी बैंगलोर, इंडी ये, इंडी वो, इसको इंडी एफ्रो, ये सब कुछ मिला के उन लोग ने ये कर दिया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज नॉट फिल्म म्यूजिक, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद आर्टिस्ट टुडे, मैं जब बात करता हूं, आज मैं 8 महीना पहले मैंने जिसके साथ बात किया है, आज 8 महीना बाद में जिसके साथ बात कर रहा हूं, there is a lot of change because 8 महीने से these guys have been struggling to get their songs released, and today they had been running behind record labels, everybody for subsequent payment कि यार मेरा पास इतना गाना है, मैं इतना में बेचूंगा। नहीं हुआ। टुडे उन लोग आके मुझे आके बोल रहे कि यार शुभ्रो सर, शुभ्रो भाई, शुभ्रो दा, जो भी मुझे बोलते हैं, आई वांट टू रिलीज माय सॉन्ग्स इंडिपेंडेंटली। ये चीज ईशान को बहुत पहले से समझ में आ गया, ठीक है, ही नोज इट। So I think rather than just waiting for people to bounce back to you, it is better that हम लोग को जो लगता है कि मेरा इतना गाना है, I'll start releasing my songs independently. Because आज मार्केट में तुम जब जाओगे, रिकॉर्ड लेबल्स फर्स्ट, मैं जब रिकॉर्ड लेबल में था, मुझे पहले क्या पूछते थे, if I suggest an artist, लाइव शोज के लिए बोलो, गाने के लिए बोलो, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके देखो, इसका कितना फॉलोअर्स है। सेकंड, इसका डीएसपीज में जाके देखो, इसका स्पॉटिफाई में, हंगामा में, विंक में, ये वो, इसमें कितना इसका मंथली लिसनर्स है। उसके ऊपर जज करके उन लोग डिसाइड करेंगे कि तुमको गाना देना है कि नहीं देना है, तुम्हारा गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, तुमको कितना पैसा देना है, तुमसे फ्री में करवाना है या तुमको पैसा देके करवाना है। These are the things that comes up. So what I believe today, see, this is a very open conversation, so because I want to pinpoint the pain points of the artists who are in this industry today, जो फेस कर रहे हैं इतना सारे कुछ, जो जिसको लग रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज यार तुम लोग दोनों बॉम्बे में रह रहे हो, तुम्हारा एक घर, जो जिस घर पे रह रहे हो उसका रेंट भरना है, खाने का भी पैसा देना है, ठीक है, तुम्हारा फैमिली एक्सपेंसेस भी है, लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हम लोग का सबके पास रहते हैं। आई विल नॉट से दैट कोई आई विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड वुमेन, equal everybody. I come across so many female artists from the country who comes down to Bombay and they are struggling so hard. In लोग आज the talent is so nice, but then लोग को opportunities नहीं मिल रहा है, बोल के they are going and singing in different cafes and small places. But at the end of the day क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है. So the idea is that how do we come together? एक साथ आके जब तुम आवाज उठाओगे, जब तुम बात करोगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के पास जब ये आएगा ना कि आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर दिस पीपल फेसिंग, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तभी द एंटायर सिस्टम विल चेंज, और एल्स चेंज नहीं होगा। टुडे आई एम टॉकिंग टू अ कपल ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड लेबल्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। आई एम सिलेक्टिंग, तो उन लोगों के साथ मेरा डील ऐसे हो रहा है कि आप लोग आपका आर्टिस्ट मुझे दो, उन लोगों का गाना मैं रिलीज करवाऊंगा, आपका आर्टिस्ट को ले आके मैं पूरा यूरोप में, यूएस में मैं लाइव शोज करवाऊंगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी, आज एक शुभ का या किंग का या किसी का भी एक स्पॉटिफाई में, एक प्लेलिस्ट में मिलियंस में स्ट्रीम्स कैसे हैं, कैसे मिलियंस में स्ट्रीम्स है इन लोग। और सोचो कि आज प्रतीक को सोचो, या यू थिंक अबाउट समवन लाइक से Ridways, a Divine, they are not signed with any record labels. Still, why these guys are famous? Still, how and why are they earning in crores in a month? महीना में करोड़ क्यों कमा रहे हैं? When we approach them, नहीं करना यार, मुझे रिकॉर्ड लेबल के साथ करना ही नहीं, मुझे 10 लाख दे, 20 लाख दे, नहीं करना है। आई एम हैप्पी डूइंग इंडिपेंडेंट, बिकॉज मैं पूरी उम्र, एंटायर लाइफ मैं पैसा कमा रहा हूँ। टुडे आई एम ऑल्सो मैनेजिंग अनदर बैंड ऑफ वॉइस, आपने सुना होगा वो पुराने वाले, मेरी नींद। सो आई बीन स्पीकिंग टू देम। आज जो उन लोग ने गाना, जो मेरी नींद जो गाना है, आज भी अगर कोई यूट्यूब पे जा रहा है, कोई गाना इसका सुन रहा है ना, इन लोग को अभी भी रॉयल्टी मिल रहा है घर पे बैठ के। सो माई आइडिया इज टू, देयर आर टू वेज, इज टू अंडरस्टैंड योर पेन पॉइंट्स, गिव यू माई एक्सपीरियंस, help you guys to build a community so that with this entire community we can move forward. अपने पास इतना आर्टिस्ट
होना चाहिए, इतना गाना होना चाहिए कि एनीबडी कम्स एंड सेज टू दिस इज इट, मुझे ये करना है। तुम आज कोई भी, if you go to any film production house, they will, I worked in a film production house, I just left a film production house, I worked with ये दो मिशन रानीगंज और गणपत में I worked. The problem is they will not give a hit to you because वो लेवल तक जाना बहुत मुश्किल है। वहां पे जो लोग बैठे हैं ना वो अलग है, इन लोग को पैसा दिखता है। So I don't want to discourage anybody. The entire thing is that I want to encourage you guys. I know how Ishaan is struggling with a job and he's also doing his music. He's keeping everything in the forefront. ठीक है? So any which ways, मैंने ज़्यादा बोल दिया. This is my, मेरा थोड़ा सा habit है ज़्यादा बोलने का. But I wanted to share with you guys my idea, my thought process, so that you guys also understand. Ishaan के साथ I had a lot of conversations in the past. New people who are joining in, I also want to inform them, educate them about क्या हो रहा है क्या नहीं, और अपना सोच को थोड़ा सा बदलो। यहाँ पे ना कोई किसी को हेल्प नहीं करने वाला है, इंडस्ट्री में नहीं करेंगे। इन लोगों के पास पैसा नहीं है, पहले बात तो पैसा नहीं है देने के लिए। इन लोग पैसा बनाएंगे और जो पैसा बनाते हैं वो अपने पास ही रखते हैं, पैसा नहीं देते। और जो पैसा देते हैं वो तुमसे तुम्हारा पूरा गाने का राइट्स खरीद के उसमें उन लोग करोड़ों में धंधा करेंगे। ठीक है? So any questions you guys, or koi thoughts that you want to share? I would like to wrap up in the next 2 minutes. Don't want to make it long. So I think yeah, Subhro has put out this very beautifully कि अपना सारथी इंसान को खुद ही होना होगा। बिल्कुल सही। Of course, and I would also request people who are watching the video to get connected to all of us. Let's talk. If you guys want to connect with me personally, for any kind of suggestions, ideas, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, I'm not God for anything, but थोड़ा बहुत जो idea है, I can share these ideas with you. I can probably guide you in the right way and protect you from being exploited in the market and connect you to the right people who will be able to come down and help you. Because I have a vision to work for independent artists. I have a vision to make it big and better for the independent artists and for the music industry. So ये struggle तो है, and I am focused on it. Anything else? Absolutely. So I think it's always better to build your own catalog. Don't wait for labels के अच्छा अभी लेबल से आएगा, नहीं जब तक नहीं आ रहा keep on releasing stuff. Absolutely. और ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही गाना बना के छोड़ने वाले हो, right? Keep on making music, keep on releasing it. There will be a time will come जब कोई ना कोई आपको recognize करेगा, उसको दिखेगा potential, अगर है तो दिखेगा। Very much. It's very absolute blunt thing कि अगर potential है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो सिंपल बात है कि keep on releasing your music, be honest to music, don't follow trends कि अच्छा अभी ये म्यूजिक चल रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। Do music जो आपके अंदर से निकल रहा है। Divesh has asked a question. Music and film industry is too unorganized. What are your thoughts? What are your thoughts? Ishaan? I think Subhro is much more experienced than me, and Divesh sir is a very senior lyricist. So that's what. I forgot his name. Divesh, bro. The famous. हाँ, बोलो bro. You want to say something? Okay, I think is it. नहीं, I was pointing you कि आप बोलिए एक बार. हाँ, Divesh. The idea is, see, the conversation, the podcast or the indie cast, which I call it, I've opened this, I started this just to identify the entire unstructured or the unorganized industry that we are facing in the challenges. Again, how to overcome these challenges, how to, come up with your own stand, and so that you do not have to be dependent on others. Film industry, of course, is India mein every industry is very unstructured. सब unstructured है. Today, if you're actually going abroad, वहाँ पे एक जस्टिन बीबर जो बच्चा था, उसको they made him big. आज तुम एक कोई बच्चे को लेके जाओ कोई इंडस्ट्री में, कोई भी रिकॉर्ड लेवल में, लोग नहीं बनाएंगे. हाँ, अगर आज तुम कोई सेलिब्रिटी के बच्चे को लेके जाओ, उसको बड़े बनाएंगे. They will make them big. They will not make our kids big. कौन है यार, तू है कौन? तूने अभी तक क्या किया कि मैं तेरे बच्चे को बड़ा बनाऊं? अगर मैं हूँ कोई सेलिब्रिटी यार, I am there, I'm a very very big guy. Then they will come and tell me कि भाई तेरे बच्चे को भेज. Because my time is up. Now अभी क्या होगा, मेरे बच्चे से लोग कमाएंगे. So unstructured, unorganized, every place is unstructured and unorganized. That is there. But how do we make it better? How do we make it better is how do we work together to make it better. अकेले मैं कोई गांधी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगा अकेले. ठीक है, I can just share my ideas, share my thoughts.
इंडस्ट्री में मैंने क्या महसूस किया है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं आप लोगों से मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि यार आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, इसके साथ बात करो, इसके साथ करो. मेरे साइड से जो होगा आई विल डेफिनेटली बी एबल टू आई विल गाइड यू थ्रू दैट, आई विल गेट यू एवरीथिंग, बट द रेस्ट इज योर कॉल. मैं कभी कभी बोलता हूँ कि यार आज इफ यू कंसिडर एज महाभारत में जैसे कृष्णा और अर्जुन, आई कंसिडर समटाइम्स माय सेल्फ एज कृष्णा कि यार मैं तुम्हारा जो चैरियट है मैं चला रहा हूँ, तुम हो अर्जुन, मैं जितना हो सके मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा, अभी तुमको जाना है कि नहीं वो रास्ते में ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स देयर आर people who are sitting in the industry who are 10 million times better than me, who can speak better than me, who knows the industry better than me, but not everybody will come and touch the pain points of the artist and they will not understand until and unless. Another very important factor, आज record label में जितने सारे लोग बैठे हैं ना, 90% of them are not musicians. They do not come from a music background. They come from business and strategy background. They do not understand the emotions of artist. आज हम लोग घर पे रात रात को बैठ के बिना सोए खाना नहीं खा के हम लोग गाना बनाते हैं, गाना बना के करते हैं. That is our efforts, right? हम लोग को क्या आता है यार, कोई we do not know IT. We only know how to make songs. We only know how to sing. We only know how to produce. We only know how to make songs. अगर आज कोई दूसरा बंदा आके बोलो तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी हेड को, कोई भी कंपनी का बिजनेस हेड को आके बोलो भाई मेरे लिए गाना बनाओ, तो बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा. उसको बोलो ड्रम बजाओ, नहीं बजा पाएगा. गिटार बजाओ, नहीं बजा पाएगा. स्किल सेट सबके लिए अलग अलग होते हैं. सो द आइडिया इज रेस्पेक्ट द पीपल. सो एनी व्हिच वेज इट वाज गुड टॉकिंग टू यू. मैंने सबसे ज्यादा बात किया. सो आई होप टू कनेक्ट विद यू गाइस अगेन. वी विल मीट इन पर्सन. या ब्रो. आपसे ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और सीखने को भी मिल रहा है, पता चल रहा है चीजें. क्योंकि अभी तक इतने सारे सॉन्ग रिलीज करने के बाद हमारा जो स्पॉटिफाई और वो सारी चीजें हम उतना ही शेयर कर पाते हैं जितना हमारा ऑडियंस है ना. उसके बाद प्रमोशन के लिए फिर पैसे लगाने पड़ते हैं. तो और मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट कम मिलता है, तो ये स्ट्रगल ही है. तो कई सारी चीजें आज क्लियर हुई है. थैंक यू सो मच भाई. No worries. Thank you that तुमको अच्छा लगा सुन के. But ये जो इंडी पॉडकास्ट है, आई एम गोइंग टू डू इट एवरी डे. इधर उधर थोड़ा सा टाइमिंग रहेगा. आई विल बी अपडेटिंग इट बिकॉज एवरी डे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स. गाने को तुम कैसे और बढ़ा सकते हो, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, व्हिच आर द बेस्ट चैनल्स दैट आई थिंक दैट अकॉर्डिंग टू मी, हाउ कैन वी गो इंटरनेशनल, what are the pain points in distribution, what are the pain points in terms of the digitalization of this entire industry. Okay, how can brands be associated with us, how can we bring in a brand to exchange music and brand synergy. There are various topics that I have in my mind. I would like to discuss with you guys and take your ideas and suggestions and go out in the market and work together. That is the entire deal. At the end of the day, we all want to become successful in terms of money, recognition and fame. सबको यही चाहिए. That's what I think. Anyways, guys, thank you so much for your time. It's we had spent good 45 minutes today. आप लोग ध्यान रखो अपना, and let's meet tomorrow again around 7:30. I'll update that with some new subjects and all. Please feel free to join the conversation at any time. Ishaan, again, thank you so much for your time. And go again. I forgot your name. I'm so sorry. Vicky, bro. Vicky will meet up. हम लोग मिलते हैं जल्दी. Please connect with Ishaan as well. Ishaan has been in this industry for a long time. He'll be able to guide you through as well. Okay. And well, guys, thank you all the viewers. Thank you so much for your time as well. 2-3 minute आपने जितना भी time invest किया हम लोग के conversation में. All right. Take care, guys. Thank you. See you and bye bye. Have Bye. a great evening. Take care. Bye.